Hello students, welcome to SS classes. Today we are going to learn about the neurotransmitters and the gap between the two neurons, that is called synapse. So many times this question was asked in the board examination, children, that is what is synapse and write its function. So children, synapse is the microscopic gap between two neurons. So here you can see this is the nerve ending of one of the neuron which is connected to the dendrite of the next neuron. We know that in my previous lecture I told you that in our body these nerves, various nerves are there which are connected to one another, and these nerves carries the impulses from one part of the body to another. For example, from the receptor organs to our central nervous system, and from central nervous system to our effector organs, in order to give appropriate response to a particular kind of stimulus. So what exactly happens at the place of this gap called synapse? Let us see. So when the nerve cord is formed, so this any kind of nerve if you are talking about, so these nerves are made up of the network of the neurons. So in that one neuron is connected to another neuron and hence form the network of the neuron structure. So one neuron is connected to another neuron, but there is a gap present between this neuron, and this gap is called synaptic gap, which is a microscopic gap present between two neurons. Now what happens if, for example, if you touch any hot utensil, so the message of that hot utensil is carried by the nerve from our receptor organs up to the central nervous system, that is the spinal cord, especially in this example. And from spinal cord, again this message is then carried to our muscle cell, and hence the muscle cell contracts and we pull our hand automatically away from that hot utensil. Now in this process, what exactly happens in between the two neurons that we are going to study today? So let us assume that this is one of the neuron. Here is the neuron, this is the axon, and this is the nerve ending of a particular neuron. Now this neuron is connected to another neuron, dendrite of the next neuron. Now what happens, as the electrical impulses are passed through this axon, these nerve impulses, as these nerve impulses are passed through the axon, these nerve impulses then get converted into the chemical impulses, and these chemical impulses are called as the neurotransmitters. The example of neurotransmitter is acetylcholine. So this acetylcholine is then transferred from the nerve ending of one of the neuron, and hence this neurotransmitters then release into the synaptic gap by the vesicle produced in the nerve ending of the previous neuron. Now once the membrane of this vesicle fuses with the nerve ending membrane, and hence these chemicals are released into the gap that is called the synaptic gap. Now this neurotransmitter travel across the synapse and stimulate the dendrite of the next neuron. So the membrane of the dendrite of the next neuron have the receptors, and this receptor then intake those neurotransmitters, and hence the dendrite of the next neuron gets stimulated, and hence the nerve impulses are formed in the next neuron. Now from that next neuron, in the same way, the electrical impulses are travel and finally reach the nerve ending. In the nerve ending, again the electrical impulses get converted into chemical impulses such as neurotransmitter, and these chemical impulses again travel the synaptic gap present between those neurons and hence stimulate the third neuron. In this way, these electrical impulses get converted into chemical impulses, and again chemical impulses get converted into electrical impulses. In this way, one neuron stimulates next neuron and so on, and hence the message is carried by the nerve up to our central nervous system, that is brain and spinal cord. In brain and spinal cord, this message is then transformed into the message of response, and hence we give response accordingly. So this is the function of the synapse. What is synapse? Synapse is the microscopic gap present between two neurons
where the chemical impulses travel from one neuron to next neuron in order to pass the electrical impulses from receptor organs to the effector organs. Now let us see how this process takes place. Here you can see, children, here is the pathway for the conduction of nerve impulses in our body. So this we will discuss in detail what reflex action is actually, but you should know what is the pathway, what is the way by which the nerve impulses travels in our body. So this is the receptor organ. For example, the sense organs such as eyes, ears, nose, tongue, skin, any of the sense organ which contain the receptor. So here we have taken example of the skin. And skin contain two kinds of receptor, thermoreceptors and thigmoreceptor. Thermoreceptor determines change in the temperature and thigmoreceptor determines the sense of the touch pressure. So once we touch the hot utensil, what happens? Once we touch the hot utensil, the message of hot utensil is received by the receptors present in our skin. And this message of the hot utensil is then carried to our spinal cord. So children, why spinal cord? You will ask me. Why not brain? So that you will become clear in the next topic, that is the reflex action. In this topic right now, just remember what is the pathway. So this message of the heat is then transferred to the central nervous system. From central nervous system, another cord is arising, that is the motor neuron, which transmit the message to effector organs such as muscle or gland present in our body. In this case, here is the muscles in the arm. So this effector organ receives those message of the response and works accordingly. And hence our muscle contracts and we pull our hand automatically away from the hot utensil. Fine. So this is the pathway by which the nerve impulses travels in our body. And which part of the nervous system carries this message? These are nothing but the nerves, and these nerves are made up of the network of the neuron. One neuron is connected to another neuron, and the gap present in between these two neurons is called synaptic gap, where the chemical impulses are travel and stimulate the next neuron, and this process occurs very fast. You might have experienced that when we touch the hot utensil, what exactly happens? Once we touch the hot utensil, immediately within a fraction of a second we pull our hand away from that hot utensil. So this process occurs very fast in order to give appropriate response to a particular stimuli. So children, let us see what reflex action are. So after learning the synapse and its function, our today's next topic is reflex action. So children, reflex action is nothing but the spontaneous, that is the automatic response given to a particular kind of stimulus. As I told you one example, that when we touch any hot utensil, what happens? Within a fraction of a second, we automatically pulls our hand away from that hot utensil. And in order to happen this process, few microseconds are required only. It happens very fast. So such a spontaneous and the rapid response given to a particular kind of stimulus is called reflex action. And this reflex action is controlled by autonomous nervous system. In my previous lecture, I explained you the parts of nervous system, that is the central nervous system and the peripheral nervous system. Peripheral nervous system is further classified into autonomous nervous system and voluntary nervous system. So this autonomous nervous system control this reflex action. So what are other examples of the reflex action, children? For example, sneezing, coughing, yawning. Whenever someone touch you from the backside, you ultimately moves in the backward direction in order to give response. When the bright light falls on our eyes, then what we will do? We will put our palm on our eyes in order to protect our eyes. So these are the examples of the spontaneous response, the reflex action. So बच्चों, ये जो reflex action है, ये होते क्या है? It is a spontaneous response
क्विक रिस्पॉन्स जो हम किसी भी स्टिमुलस की तरफ देंगे. फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको आवाज़ दी तो आप तुरंत मुड़ के देखते हो. ठीक है. एक्सीडेंटली अगर समझो सेप्टिपिन है या फिर आपका कंपास है जो आपको ऐसे नोच गया हाथ पे एक्सीडेंटली एकदम से, सो आप तुरंत उसको रिस्पॉन्स करोगे. फाइन, यू विल पुल योर हैंड अवे फ्रॉम दैट. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. Another example, if you are walking on the street and you will observe that the dog is running behind you, what will you do? You will start running away from that dog because you know that if the dog will bite you, then it will cause a lot of harm. So running away from the scary situation, running away from the frightening object is nothing but again a kind of reflex action. Now children, these reflex actions are of two types, natural reflexes and the acquired reflexes. So natural reflexes ही वो reflexes है जो हम naturally gain करते हैं. जैसे कि समझो आपको कफिंग हो रही है, सो हम कफ करेंगे. अगर डस्ट पार्टिकल समझो आपके नोज में गए, आपको एलर्जी है, सो हम स्नीज करेंगे. फाइन, सो ये जो है ये नेचुरल, इट हैपन्स नेचुरली. एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स इज द एक्वायर्ड रिफ्लेक्स. एक्वायर्ड रिफ्लेक्स मतलब ये ऐसे रिफ्लेक्सेस है जो हम एक्वायर करते हैं बाय एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच एनी हॉट यूटेंसिल, वी पुल आवर हैंड ऑटोमेटिकली अवे फ्रॉम दैट प्लेस. जब हम छोटे बच्चे थे हमको पता नहीं था कि ये हॉट यूटेंसिल हमको हार्म कर सकता है. जैसे फर्स्ट टाइम हमने उसको टच किया तो हमको समझ गया कि नहीं ये चीज़ हमको हार्म करती है, तो हमको इसको हाथ लगाना नहीं है. सो ये हमने गेन किया एक्सपीरियंस से. सो ये जो एक्सपीरियंस है गेन किए हुए रिफ्लेक्स एक्शन से, दे आर कॉल्ड द एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस. सो दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट इज द नेचुरल रिफ्लेक्सेस and the acquired reflexes. Now second classification of the reflex action is depend on what part of the central nervous system is getting involved in the reflex action. So in my previous lecture I told you there are two parts of central nervous system. One is the brain and the second is spinal cord. So these both the parts are located in the central part of our bodies, hence it is categorized as the central nervous system. Now in not all reflexes both the parts of CNS are involved. There are some reflex action which involves only the spinal cord, while there are some reflex action which involves brain alone, and there are some reflex action where both the parts of central nervous system are involved, that is brain as well as spinal cord. So let us see one example of these spinal reflexes. So बच्चों मैं आपको एक example देती हूँ. For example आपको स्कूल को जाना है, ठीक है. अब स्कूल को जाते समय आपको लेट हो गया है. स्कूल के जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं. एक जो है वो लॉन्ग है और सेकेंड जो है वो शॉर्टकट है. एक लॉन्ग कट है जो आपको स्कूल तक पहुंचाएगा और एक शॉर्टकट है जो आपको जल्दी स्कूल में पहुंचा देगा. अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप हर रोज़ लॉन्ग कट से जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको आपके दोस्तों के साथ जाना होता है, बातें करते करते टहलते हुए जाना होता है, ठीक है. सो आप हमेशा जल्दी घर से निकलते हैं और आप लॉन्ग कट से स्कूल में जाते हैं. बट आज हुआ ऐसे कि आपको उठने में लेट हो गया और अभी आपको बहुत ज़्यादा हरी है स्कूल पहुंचने की, क्योंकि आपको पता है अगर टाइम पे नहीं पहुंचे, प्रेयर के पहले अगर नहीं पहुंचे तो पनिशमेंट होगी. सो आप क्या प्रेफर करोगे? वापस हमेशा की तरह लॉन्ग कट से जाओगे कि शॉर्ट कट से जाओगे? सो ऑफ कोर्स आप शॉर्टकट ही प्रेफर करोगे. सो रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसे ही होता है. जब भी किसी स्टिमुलस को आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है तब आपके बॉडी का जो पार्ट इन्वॉल्व होता है इस एक्शन में, दैट इज द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और इसी को हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन, जो बहुत ही क्विक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और हर बार ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है. सो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, दैट इज व्हेनेवर वी टच एनी हॉट यूटेंसिल. सो से फॉर एग्जाम्पल हियर इज द स्टिमुलस, दैट इज द हीट. नाउ व्हाट हैपन्स when we touch any hot utensil, this message of the hot utensil is received by the receptors present in our skin.
which detect the change in a temperature, and hence this message is travel up to the central nervous system but not a brain. ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचाया जाएगा. अब जैसे ऑफिस है, ऑफिस में दो अलग अलग पर्सन है, एक तो डायरेक्टर है ऑफिस का और सेकंड जो है वो मैनेजर है, समझो. सो जो ऑफिस का जो डायरेक्टर है उसको लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो वो हर जगह पे ध्यान नहीं दे सकता है. बट जो मैनेजर होते हैं उसको अथॉरिटी दी है कि आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं अपने लेवल पे. ये वैसा ही है. जो ब्रेन है आपका वो डायरेक्टर इमेजिन करो, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आप मैनेजर इमेजिन करो. सो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कि हर बार ब्रेन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. स्पाइनल कॉर्ड कैन टेक डिसीजन अलोन एंड कैन गिव रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली. सो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इसमें भी एबिलिटी है, जैसे कि ब्रेन में एबिलिटी होती है थिंकिंग की. सो थिंकिंग पार्ट, ऑफकोर्स मेन थिंकिंग पार्ट जो है वो ब्रेन ही है, बट स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा एबिलिटी दिया है थिंकिंग के लिए कि वो थिंक कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग ब्रेन इन दी सम रिफ्लेक्स एक्शन. सो जिसका एक एग्जाम्पल है, व्हेनेवर वी टच एनी हॉट यूटेंसिल द मैसेज इज गिवन टू the spinal cord as a part of central nervous system, and the message of response is travel from the spinal cord to the effector organs without the involvement of the brain. So देखो बच्चों यहाँ पे होता कैसे है. So once we touch any hot utensil, the receptor present in our skin detect the sense of stimulus, and hence the sensory nerve, this is the sensory nerve. This sensory nerve carries this message from receptor to our spinal cord. Receptor to our spinal cord. Now this message is in the form of stimulus. It is in the form of the chemical impulses. So these chemical impulses are then travel from receptor organs to the central nervous system. So अब तक ये प्रोसेस जो है रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं. सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया दैट इज द रिसेप्टर ऑर्गन्स, जो आपके सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर होंगे. सेकेंड पार्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन. सो दिस सेंसरी न्यूरॉन कैरीज द मैसेज ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. 1 मार्क के लिए भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. सो व्हाट यू विल राइट देयर, sensory neuron carries the message from receptor organs to central nervous system. Now in the central nervous system, in this example the spinal cord is involved. The relay neurons are located, and this relay neuron convert the message of stimulus into the message of response. but यहाँ पे message क्या है, that the utensil is hot. And what is the response for this stimulus? Pulling hand away from that utensil. So stimulus से central nervous system तक जो message दिया गया that is the utensil is hot, और spinal cord से जो message आगे convert किया जाएगा वो रहेगा message for the response. So वो message कौन सा रहेगा, pulling hand away from the plate, away from that hot utensil. फाइन. सो यहाँ पे मैसेज कन्वर्ट किया गया, जो स्टिमुलस का मैसेज था दैट द यूटेंसिल इज हॉट, ये कन्वर्ट किया गया इनटू द मैसेज ऑफ रिस्पॉन्स दैट इज पुलिंग ऑफ हैंड अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल. नाउ दिस द रिले न्यूरॉन प्रेजेंट इन दिस स्पाइनल कॉर्ड, दिस रिले न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैसेज ऑफ स्टिमुलस इनटू द मैसेज ऑफ रिस्पॉन्स, एंड दिस response message is then carried away from the spinal cord up to the effector organs such as muscles in our arm by the neuron called motor neuron. So this motor neuron carries the message in the form of electrical impulses, and what message is that? Message of response from spinal cord up to the effector organs. So the motor neuron carries message from CNS to the effector organs. So in this way the reflexes travels in our body.
the impulses, chemical impulses travels in our body in order to give appropriate response to a particular stimuli. अब बच्चों ये जो process है, whenever we touch any hot utensil, we pulls our hand automatically away from that hot utensil. Is an example of spinal reflexes. Is an example of spinal reflexes where the brain is not involved in this process. So, how one can define spinal reflexes? The automatic quick response given by a spinal cord alone to a particular kind of stimulus. So, this is an example of the spinal reflexes, the kind of reflex action where only spinal cord is involved. Let us see second example of the reflex action, that is the cerebral reflexes where spinal cord is not involved, only brain is involved. So let us see what is that. Before discussing the cerebral reflexes in detail, you should know about the definition of receptor and effector first of all. So children, what these receptors are? These receptors are nothing but the cell or the group of cells present in our sensory organs. For example, here we have the skin. So the skin cells are itself a receptors which can detect the change in a temperature. So these receptors are nothing but the cells or the group of cells which can detect the sense of stimulus, and hence the message is given to the sensory neuron. Now what are these effector organs? These effector organs are nothing but the muscles or the gland which gives response to stimulus in a reflex action. For example, here the muscle, as our muscles in the arm contract, so our hands automatically pulls away from that hot utensil. I'll give you another example of the gland, that is the adrenal gland present on our kidney. See what happens whenever we see any frightening object. We run away from that frightening object. Why this is so? Because as we see the frightening object by our eyes, the message is given to our brain and spinal cord, of course, and later on to the gland. What gland involved in this process? That is the adrenal gland. So adrenal gland secrete adrenaline hormone. This adrenaline hormone then increases our breathing rate, our heartbeat, and which produces lot of energy which help us to run away from the frightening object. So in this process, the glands are involved. So these muscles and glands are nothing but the effector organs which gives appropriate response to a stimuli. So I hope these two topics are very much clear for you, that is the receptor and the effector. So receptor receives the stimulus and effector gives response to stimulus. So children, this is about spinal reflexes. Let us discuss the cerebral reflexes. Now in cerebral reflexes, only the brain is involved, not a spinal cord. Let us see an example. The stimulus is the bright light. What happens when the bright light falls on our eyes? When bright light falls on our eyes, then the size of the pupil in our eyes decreases. अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये लाइट ब्राइट है, ये आपके आइज को हार्म कॉज कर सकता है. सो अगर ब्राइट लाइट आपके आइज में ज़्यादा लेवल में जाने नहीं देना है, तो आपके आइज के जो प्यूपिल्स है, ये प्यूपिल्स की साइज छोटी हो जाएगी. एज द मसल्स इन द इरीज कॉन्ट्रैक्ट, द साइज ऑफ द प्यूपिल डिक्रीजेस. और अगर प्यूपिल का साइज डिक्रीज किया गया तो एक्सेस लाइट, जो ब्राइट लाइट है, ये आपके आइज में ट्रैवल नहीं होगा और जो आपके आइज है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे. व्हाट हैपन्स इफ द ब्राइट लाइट एंटर्स इन आवर आइज in very large amount, so that will cause damages to our eyes. So in order to protect our eyes, the size of the pupil decreases as the muscles in the iris contract, and this is the response for the bright light. In this process, spinal cord is not involved, only the brain is involved. Let us see what happens in this reaction. So this is a stimulus called bright light. So the photoreceptor present in our eyes detect the
message of the bright light. It sends the light is very bright, and then the message of the bright light is then travel through the sensory nerves up to the brain as a part of central nervous system. In the brain, the message of bright light is converted into the contraction of the iris muscle. क्योंकि रिस्पॉन्स हमको देना है, स्टिमुलस क्या है कि लाइट ब्राइट है, रिस्पॉन्स क्या देना है, iris muscle should get contract so the size of the pupil get decrease. So ये जो मैसेज कन्वर्ट किया ब्राइट लाइट का जो मैसेज था उसको कन्वर्ट किया रिस्पॉन्स के मैसेज में. क्या है रिस्पॉन्स? contraction of the muscles of the iris in our eyes, so the size of the pupil decrease. So this message is converted by the brain, and hence the brain travel this message with the help of motor nerves from the brain up to the effector organ. So what are effector organ in this case? They are nothing but the iris of our eyes. So as the muscles of the iris contract, the size of the pupil automatically decreases, and hence decrease in the pupil size is the response, and hence our effector organs such as the muscles in the iris contract, and hence it protect our eyes from getting damaged by the bright light. So for this process only the brain is involved, and this kind of reflex action is called as the cerebral reflexes, where only the brain is involved. Now children, third example I'll give you, that is the cerebrospinal reflexes, where both the parts of CNS are involved, that is brain and spinal cord. So let us see what example is that. For example, you are walking on the street and accidentally you see that the dog is running behind you. What will you do? You will start running away from that dog. क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये डॉग, अगर आप वहीं पे रुक गए और हार्ट बीट बढ़ेंगे, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, आपने और कुछ गलत करने की कोशिश की तो ये डॉग आपको काट लेगा. दूसरा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आप ऐसे ही जू में गए हैं, ठीक है, और जू में आप एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो. सो लॉयन वहाँ पर है, टाइगर वहाँ पर है, ठीक है. तो वैसे आप पास में गए और आपने अचानक से देख लिया कि टाइगर जिस केज में है उसका डोर ओपन है और अभी वो बस टाइगर भागने ही वाला है वहाँ से. सारे लोग वहाँ पे जो है खड़े, वो क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम दैट केज, इजंट इट? तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? हमने सिर्फ देखा है उस टाइगर को, अब तक वो हमारे पीछे आया भी नहीं है, ना कि वो केज से बाहर आया है. आपने सिर्फ उसको देखा है, बट आपको पता है क्योंकि एक्सपीरियंस आपके माइंड में स्टोर है. आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट आपके लिए फ्राइटनिंग है, ये एक कार्निवोरस एनिमल है और ये आपको खा सकता है, आपको पता है. सो बिना उसके बाहर आने के पहले ही आप वो ऑब्जेक्ट से डरे हुए हो. ये क्यों है? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस्ड है ये चीज़ों का. किसी ने आपको बताया है, आपने वो सुना है, समझा है, देखा है, खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, फिर भी ये इमेजिनरी एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में स्टोर है और अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्स करोगे. अब प्रोसेस होता कैसे? जैसे आपने वो फ्राइटनिंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जेक्ट फ्राइटनिंग है, ये मैसेज आपके आईज से नर्व्स के थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन में दिया गया. आपके ब्रेन ने उस मैसेज को प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, देखो दोनों पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्रेन भी इन्वॉल्व हुआ है और स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है. सो ब्रेन के बाद ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके एड्रिनल ग्लैंड को दिया गया. एड्रिनल ग्लैंड जो है ये आपके किडनीज के ऊपर लोकेटेड है. सो ये मैसेज जैसे आपके एड्रिनल ग्लैंड को दिया गया, आपके एड्रिनल ग्लैंड ने हार्मोन सीक्रेट किया कॉल्ड एड्रीनलिन. फिर ये एड्रेनालिन हार्मोन सीधे जाके आपके हार्ट पर जाके एक्शन शो कर रहा है, जिससे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, जिससे लॉट ऑफ ऑक्सीजन आपके मसल सेल को सप्लाई किया जाएगा. वाई? इन ऑर्डर टू रेस्पायर मोर, एंड व्हेन the cells respire more, lot of ATPs are generated.
and this energy only help us to run away from that frightening object. So बहुत बार ऐसे भी होता है, समझो आप क्लासरूम में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में आप कुछ तो भी करते हो, टीचर आपको डांटना स्टार्ट करती है. सो जैसे आपको टीचर बोलते हैं कि बेटा स्टैंड अप, तो आपको खड़े तो होना ही है. उसके बाद देखो आपके जो हार्ट बीट बढ़ जाते हैं. अब तक टीचर ने कुछ भी किया नहीं है, ना ही आपको डांटा है, ना ही आपको एक चाटा लगाया है, कुछ भी किया नहीं है, सिर्फ आपको बोला है कि स्टैंड अप. बस इसी वर्ड की वजह से आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे क्या होने वाला है. सो ये आपके साथ एक्चुअल में हुआ नहीं, बट आपको पता है, एक्सपीरियंस से, देखा है, सुना है, उससे आपको पता है. सो ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो आपके हार्ट बीट बढ़ गए, इसके लिए कौन कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल है CNS के? इसके लिए दोनों पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी. जैसे आपने वो वर्ड सुने टीचर के, वो स्टिमुलस आपके ब्रेन तक दिया गया, ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक दिया गया, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आपके एड्रिनल ग्लैंड तक दिया गया, जिससे आपके ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गए, और साइमल्टेनियसली आप एकदम सडनली आप खड़े हो गए. आप बैठे थे बेंच पे, आप सडनली एकदम खड़े हो गए और आप रिस्पॉन्स कर रहे हो टीचर को. तो ये जो प्रोसेस हुआ बहुत फास्ट हुआ. सो ये जो प्रोसेस था, इसमें दोनों पार्ट इन्वॉल्व हुए आपके ब्रेन के, सॉरी CNS के, दैट इज ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड. सो इस टाइप के जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जहाँ पे दोनों भी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड, दिस काइंड ऑफ reflex action is called as Cerebrospinal Reflexes, where both the parts of CNS involved, that is brain as well as spinal cord. So बच्चों ये हुआ reflex action, that is the spontaneous and quick response to any kind of stimulus. Second term that we are going to learn today is the reflex arc. So बच्चों यहाँ देखो, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये है रिफ्लेक्स आर्क. आर्क का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज कर्व, राइट? सो दिस प्रोसेस वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय द कर्व शेप, राइट? सो दिस इज द नथिंग बट द आर्क वी आर ड्रॉइंग. एंड फॉर व्हाट दिस आर्क वी आर ड्रॉइंग? द pathway by which the nerve impulses travels in our body. So this is the pathway by which the nerve impulses travels in our body, that is from the receptor organs to the sensory neuron, from sensory neuron to brain or spinal cord, that is CNS, from CNS through motor neuron to the effector organs, and here our effector organs responds accordingly. So this nerve impulses travel in this pathway only in our body. So children, what is reflex arc? बहुत बार 5 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क का रिफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं. सो रिफ्लेक्स आर्क क्या है स्टूडेंट? रिफ्लेक्स आर्क इज नथिंग बट द रूट और द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन द रिफ्लेक्स एक्शन. कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन हो, इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व इम्पल्सेस है, ये जिस पाथवे से जाते हैं, जिस रूट से जाते हैं, वो रूट ड्रॉ करना मतलब ही रिफ्लेक्स आर्क, वो रूट मतलब ही रिफ्लेक्स आर्क. सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन द रिफ्लेक्स एक्शन. And what is reflex action? It is a spontaneous and automatic response given to any kind of stimulus is called reflex action. And reflex action are of two type. Initially I told you, that is the natural reflexes and the acquired reflexes. And these reflexes are further classified into cerebral reflexes, spinal reflexes and cerebrospinal reflexes. So this arc we can also draw in this way children, that is the components of the reflex arc, or sometime they'll ask you to write the components of reflex action. So children, there are 5 components of the reflex action. The one is receptor that we have discussed already, then the sensory neuron which transmit the message from the receptor to the central nervous system. So these sensory neurons transmit the message of stimulus from receptor to CNS. Now in the CNS, the association neurons are located.
which associates the sensory neuron with the motor neuron. और मैंने आपको इसको एक अलग वर्ड भी बताया था जो आपके एनसीईआरटी के बुक में रिफ्लेक्स आर की डायग्राम में भी दिया हुआ है, and that is the relay neuron. This relay neuron convert the message of stimulus into the message of response, and hence this message of response is then travel from the central nervous system to the motor neuron, and this motor neuron carries the message of response from central nervous system to your effector organs such as muscles and the gland, and accordingly our effector organs gives response. So these are the components involved in the reflex action and the reflex arc. So बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए based on the reflex action or based on the reflex arc. So at that time you will draw the NCERT diagram of the reflex arc, and in this way you can write the components of the reflex action or reflex arc, and each and every component you have to explain in detail for 5 marks. So then only you will get 5 out of 5 marks. So children, this is about the reflex action, types of reflex action and the reflex arc. Let us discuss the NCERT diagram for the reflex action. So yes children, here is the diagram, NCERT diagram, which shows the reflex action as well as the reflex arc. So you can see here children what happened when we touch any hot utensil. When we touch any hot utensil, the message of hot utensil is travel from the receptors to the central nervous system. Here you can see children the cross section of the spinal cord. अब क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को आपने इस तरीके से कट किया है, हॉरिजॉन्टली आपने इसको कट किया है, और इसको आप ऊपर से टॉप व्यू से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कैसे दिखेगा. सो ये आपको कुछ तो भी इस तरीके से दिखेगा जिसके अंदर एक हॉर्सशू शेप स्ट्रक्चर है. सो दिस इज द व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाइट मैटर विच इज द आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, and this is the gray matter. This is called the gray matter, which is the innermost horseshoe shaped structure of the spinal cord. अब बच्चों ये क्या होता है, white matter क्या है और gray matter क्या है, हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है. सो न्यूरॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी और एक लॉन्ग डेंड्राइट दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन. सो बच्चों ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, जहाँ पर भी ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर, सो ग्रे मैटर में न्यूरॉन का जो पार्ट होता है वो होता है साइटॉन वाला पार्ट, और जहाँ पर भी वाइट मैटर है, वाइट मैटर में होते हैं सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन वाले पार्ट. सो जैसे कि अभी ये पार्ट है वाइट मैटर और ये वाला पार्ट है ग्रे मैटर. सो ग्रे मैटर में जितने भी न्यूरॉन्स वहाँ पर कनेक्टेड है उनके ज़्यादा कौन से पार्ट होंगे, ज़्यादा न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडी वाले पार्ट्स है वो इस पोर्शन में ज़्यादा होंगे. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल इट क्वाइट अपीयर्स ग्रेइश इन स्ट्रक्चर. और ये जो वाइट मैटर है, ये वाइट मैटर में कौन से पार्ट्स होंगे न्यूरॉन के, इनमें होंगे ज़्यादा के ज़्यादा न्यूरॉन के इसमें जो होंगे वो एक्सॉन वाले पार्ट्स होंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है. सो ये न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर के अंदर है, और जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो देखो वाइट मैटर में है. ये न्यूरॉन का भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. मोटार न्यूरॉन का भी आप यहाँ पर देखो कि सेल बॉडी का जो पार्ट है वो ग्रे मैटर के अंदर है, और एक्सॉन वाला पार्ट जो है वो वाइट मैटर के अंदर है. सो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, wherever the gray matter is there, that part contain lot of cell body, lot of cytons from the various neurons, and the white matter contain the axon parts of the various neurons. So ये हो गया cross section of the stem. Now what happens as the message of stimulus is travel through the sensory neuron, this message reach the central nervous system. In this case, in this example, only spinal cord is involved as a part of CNS. Brain is not involved. Now here,
in the relay neuron. This is the relay neuron which convert the message of stimulus into message of response. And this message of response is then traveled through the motor neuron up to the muscle present in our arm. So as each and every muscle fiber in that area contract, the whole muscle contract, and as the whole muscle contract, automatically our hand we pulls away from that hot utensil, and it happens very quickly, very fast. So this is the reflex action. What kind of reflex action is this? This is the spinal reflex action, where only the spinal cord as a part of CNS is involved. So बच्चों, जब भी आपको बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि what is reflex action या फिर what is reflex arc, explain the process. So for that you will write, you will draw this NCERT diagram, and apart from that you will draw reflex arc which we have discussed in earlier slides. So that reflex arc you will draw, and you will explain that process in detail with the involvement of 5 parts, that is the receptor, sensory neuron, CNS, motor neuron, and then the effector organs. So children, this is about today's topic, that is the reflex action, its type, cerebral reflexes, spinal reflexes, and the cerebrospinal reflexes. And apart from that we learn the definition of reflex arc and the importance of the gap present between two neurons, that is synapse. In my next lecture I will explain you about the detailed structure and the function of brain, and at the end of the chapter we'll discuss the endocrine system in detail, and then we'll end up this chapter. So children, if you like my video, please don't forget to like and subscribe. Thank you.